Convex lens ray diagram is one of the most scoring topic, but only if you know the right tricks. So let's begin today's video. Move into the ray diagrams for lenses. Let us understand that what is the main difference between mirrors and lenses. In the case of mirrors, there is only one curved reflecting surface, whereas in the case of lenses, you have two curved spherical transparent surfaces. There are two different kinds of lenses. One is convex lens, this is a convex lens, and the other one is concave lens, which we are going to discuss later about their surfaces and whether they are converging or diverging. The first important difference is that in the case of mirrors you have only one curved reflecting surface, whereas the other side is polished, and in the case of lenses you have two transparent spherical surfaces. Image is formed by a phenomenon which is known as reflection. Reflection is nothing but bouncing back, which I have already discussed and covered in my previous videos. Bouncing back of light. Whereas in the case of lenses, the image is formed by a phenomena which is known as refraction. What is this refraction? Refraction basically क्या है? Whenever the light ray enters from one medium to another, एक medium से जब दूसरे medium में enter करती है, it bends. This the ray bends. Why the ray bends? Because there is difference in the optical density. Suppose करो कि medium A जो है that is air है, where the particles are the molecules are they are at large distances. Medium 2 हम समझ लेते हैं it's a glass है. So here the particles will be more closer to each other. तो यहाँ क्या होगा that when the light ray enters, the speed of light decreases, and because of that reason there is a slight bending in the light ray. And where these light rays bend exactly, that we are going to see in our next topic. There are two different kinds of lenses, convex lens and concave lens. Convex lens is curved outwards and concave lens is curved inward. And you can see from both the sides. Now, in the convex lens, it's a converging lens. And concave lens is a diverging lens. A very easy trick to remember. किस तरह से याद रखोगे? Mostly the children they get confused between the convex lens, concave lens, and the mirrors. That which one is converging, which one is diverging. तो एक इसके लिए बहुत ही easy सा trick है. In mirrors, या तो mirrors के दोनों cases सारे cases याद कर लो, और either you can learn all the cases after understanding of lens. Convex lens will always be similar to concave mirror. As you know, concave mirror is a converging mirror. इसी तरह से जो convex lens है वो भी क्या होगा? Converging lens होगा. And concave lens will be exactly similar to convex mirror. Concave lens is what? It's a diverging lens, and convex mirror is also a diverging mirror. So if you learn mirrors, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लेंस के अपने आप ही याद हो जाएंगे. The only there is a slight difference in the diagrams. Otherwise, the nature and position of the image is exactly same. Let's see. Diagrams for lenses. Let's understand these rules. Rules बिल्कुल exactly similar है mirrors के जैसे ही हैं. ये convex lens है, and this is concave lens. इसमें first rule देखो. What is happening? That a ray is incident. ये लेंस के ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू मीट एट द फोकस. वैसा ही जैसे मिरर में हमने पढ़ा था कि पैरेलल अगर होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट्स गोइंग टू पास थ्रू द फोकस. कॉन्केव के केस में क्या हो रहा है? दैट इट इज एंटरिंग इनटू द लेंस, एंटर हो रही है यहाँ, इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड, डाइवर्ज हो रही है, एंड आफ्टर दैट इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस. In the second rule, if the ray pass through the focus, then after refraction, it becomes parallel to the principal axis. And in the case of concave mirror, if you see, if it appears to pass through the focus, if a ray is incident on the lens, तो अगर वो ऐसा लग रहा है कि focus पे जाके meet कर रही है, then after refraction it will become parallel to the principal axis. So these rules are exactly similar to what we have studied in mirror. If any ray pass through the optical center, then it pass without any deviation. Here you can see in both the cases, this is optical center. ये जो लेंस का सेंटर होता है, लेंस
का जो center point है, that is known as optical center, and this is the point where any light ray pass through and refracted without any deviation. See the first case, object at infinity. अगर मेरा object infinity पे है, you know that parallel rays come. So the parallel rays incident होंगी लेंस के ऊपर इस तरह से दिखा देंगे. दो rays जरूरी हैं because without two rays mirror image cannot be formed, and these rays they are going to converge at the focus. यहाँ आके converge हो जाएंगी. So what will be the position of the image formed at f2, and the nature of the image will be highly diminished, real and inverted, as rays are actually meeting at a point. In case number 2, the object is beyond 2f1. तो एक रे यहाँ से यहाँ तक ले आओ, इंसिडेंट हो रही है and it's going to pass through the focus. दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराएंगे, इस तरह से पास करा देंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, and it's going to meet somewhere in between f2 and 2f2. इनके बीच में आके मीट करेगी and the image formed will be diminished, रियल एंड इन्वर्टेड. तो आप देखो केस नंबर 1 एंड 2 जो कॉनकेव मिरर का हमने पढ़ा था एग्जैक्टली वही है. नेचर इज एग्जैक्टली दैट ओनली एंड द पोजीशन इज अ लिटिल डिफरेंट इन बिटवीन f2 and 2f2. Now let's move quickly on to case number 3. नेक्स्ट केस देखेंगे, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट 2f1. सो वहां जब अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, तो इमेज हमारी कहाँ बनती थी, सी पे ही बनती थी. इधर क्या करेंगे, एक रे फिर से ऐसे इंसिडेंट की, इसको पास कर दिया हमने फोकस में से, एंड देन अनदर रे वी आर गोइंग टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करा देंगे, and it's going to intersect. यहाँ आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज, and which is exactly similar to the size of the object. So position of image will be at 2f2, and nature of the image will be same size, inverted and real. In the next case, object in between 2f1 and f1. तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट मेरा पास हो रहा है उतना ही दूर इमेज जाती जा रही है. अभी 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट अगर होगा तो एक रे फिर से ऐसे पास करो एंड इट्स गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, ऐसे पास हो जाएगी. अनदर रे इज गोइंग टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी एंड इट्स गोइंग टू मीट समवेयर आफ्टर 2f2. पोजीशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f2. And the nature of image will be real, inverted and magnified. Object at f1. f1 का अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, अगेन एक रे इंसिडेंट कराएंगे और इसको पास कर देंगे हम f2 में से. Another ray is going to pass through the optical center और इसके पैरेलल हो जाएगी, जो पहली रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी, एंड therefore the position of image will be at infinity and the nature of image will be again real, inverted and highly magnified. When the object is in between f1 and o, f1 और o के बीच का जो ऑब्जेक्ट होगा, अब एक रेफरेंस ऐसे इंसिडेंट कराओ, फोकस में से पास करो. Another ray will pass through the optical center but it's going to diverge. और ये दोनों रेज जो हैं ये पीछे इस तरह से मिलेंगी and it's going to form a virtual image this time. So the position of the image will be on the same side of object, on the same side of object. And the nature of image will be virtual, direct and highly magnified.